శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியினின்று நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ வெங்கடவாணனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் பக்தியை ஸ்ரத்தையோடு கண்டு அனுபவிக்க அமர்ந்திருக்கும் பக்தர்களை இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. இன்று பிறந்த நாள், திருமண நாள் என்று கொண்டாடும் பக்தர்களை மேன்மேலும் பல மங்கள திருநாட்களை கொண்டாடும்படியாக அனுகிரகிக்க எப்போதும் பொன்மலரிட்டு இமையோர் தொழுது தங்கள் கைபோது கொண்டு இறைஞ்சி கடல் மேல் வணங்கி என்று எம்பெருமான் வெங்கடவாணனின் திருவடி வாரத்தில் பிரார்த்திக்கும் இந்த வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றது. மங்களம் பொங்க வாழ்த்துகிறது. கெடுமிடராயவெல்லாம் கேசவாவென்ன நாளும் கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுககில்லார் விடைமுடை அரவில் பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பலற்றும் தடமுடை வயல் அனந்தபுரநகர் புகுது இன்றே.
சுவாமி நம்மாழ்வார் பகவானின் திருநாமங்களின் பிரபாவத்தை சொல்லும் இடத்தை இந்த பாசுரத்தாலே நன்றாக அழகுற தெளிவுபடுத்துகின்றார். இப்பொழுது நாம் காண்பது அந்த வேங்கடவாணனின் திருமுக மண்டலத்தை அழகுற கல்யாண உற்சவத்திற்கு బింబాధరం బహుళ దీర్ఘ కృపా కటాక్షం శ్రీ వెంకటేశమజమాత్మముక్తసన్నిధత్తాం భృగ్పత్రికస్య మమనీజ మధ్యే స్థిత్వా సనే కుసుమయే సమధీరయంతం శ్రీశాస్త్రధారమఖిలం విఖణో మునీంద్రం భూయో నమామి భవనైకగురం ప్రసన్నం శ్రీమతే వికనసే నమః భృగుమరీజ అత్రికస్య మేభ్యో నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంఘ్రియకం స్మరామి. ఓం భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవత కర్మణా భగవతానగృహీతో భగవతానధ్యాతో భగవన్ ధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాన్ నమన్యతాం ప్రాణానాయం యా. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యం జగర్మణి స్తండిల పరిపరిస్తరణ సర్వోపకరణ సుత్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహవాచనాక్యం కర్మకరిత్యన్నాదో నిర్విఘ్నేన పరిసమా ఆవాప్యర్థం విశ్వక్సేన ఆరాధనాక్యం జగర్మణి త్రంగంగరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాజరప్తజనమానేషు పరిపూరితేషు అపోభిగ్రంథన్ ప్రతిమాతకిష్యే కృణోమి దత్తాకం సుచరకం సుధర్మ ఇదమాపశివా శివతమా శాంతా శాంతరమా శుభా శుభతమా పూతా పుతరమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతామృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఏతే శతం వృణయే సహస్రం యజ్ఞజాపాజాపతనా పుత్రా తేభ్యో న ఇంద్రస్య విదోత విష్ణుర్ విశ్వే దేవామంజన్ మరుతస్య అస్మిన్ కుంభే ఓం వరుణమావాహయామి ప్రజేత సమావాహయామి రక్తామృతమావాహయామి యాదస్పతిమావాహయామి వరుణాయ నమః ఇదమాసనం. వరుణాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి. వరుణాయ నమః ప్రజేతసే నమః రక్తామృతరాయ నమః యాదస్పతయే నమః పుష్పాన్ని సమర్పయామి గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సుధీశ్వరాయ విద్మహే పాశహస్తాయ ధీమహి తన్నో వరుణ ప్రచోదయాత్. వరుణాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి ఆదో నిర్విఘ్నేన పరిసమా ఆవాప్యర్థం విశ్వక్సేన ఆరాధనం కరిష్యే. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర సమన్వితం జగాపతిం సంకేతం సపుష్పర్ధవాహనం పూర్వాషాఢోత్తమం దేవం దక్షిణాముఖమర్చయేత్. ఆగ్నేయుజస్వాతజామహే త్వా విశ్వే సదాత్మహితో న శంభో వైరాజంతే సోదనిధత్తాం ప్రేష్యామ దేశో విపధానామనాదర్యామి శస్తాంతరితాంతధాత్. పద్మాకారమండలే వంబో విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి నిత్యానుభాయనమావాహయామి. తద్దక్షిణే సూత్రపతిమావాహయామి వామే జగామావాహయామి సూత్రపతికా సమేత శ్రీ విశ్వక్సేనస్య ఇదమాసనం. విశ్వక్సేనాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి. విశ్వక్సేనాయ నమః శాంతాయ నమః హరాయ నమః అమితాయ నమః నిత్యానుభాయనే నమః సూత్రపత్యే నమః జగాయ నమః సూత్రపతికా సమేత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పాన్ని సమర్పయామి గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. విశ్వక్సేన స్మృతో రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణః తస్మాత్ రాజ్యముపాసీత కర్మణాం విఘ్నశాంతయే. ఆరంభే కర్మణాం పుష్టిం విజ్ఞానాం పరిసమాప్యత కుర్యాత్ సపరివారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం భవద్భరణజ్ఞాతః సుపుణ్యం పుణ్యాహం వాచయిష్యే. వాచ్యతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితం అస్తు. ప్రజాపతి ప్రజదాం ప్రజదాం ప్రజాపతిః శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంతు నీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంతు నీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాని శాం యంతు పాపాని శాం యంతు వాద్ధీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని. అతో దేవా అవంతనో యుతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నదధే పదం సమూఢమస్య మాగం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ విష్ణో కర్మాణి పశ్యతిగతో వృధాని పుష్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివీవ చక్షురాదరం తద్విప్రాశో విపన్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధతే. విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణసస్తురస్య త్రివినోదా సనరస్య ప్రియం సదే ద్రవిణోదా వీరపదే మిషన్నో ద్రవిణోధారా ఆసతే. దీర్ఘమాయుః యత్పుణ్యం నక్షత్రం దత్మత్కుర్వేదోపవ్యయం యదా మయి సూర్యపుదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావద్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జహన్యం పశ్యేత్ తావద్ గ్రవేద యత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కృతే. ఓం భూః భూర్భువస్సువరోం సదేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యం జగర్మణి సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం
भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ॐ भूः भूर्भुवस्वरो पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ति अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम सरतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तथातन महेरनाय चक्षसे न्योपश्यपतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवोयस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोकुम्भृन् यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वरेवी पुनते देव्यागात् यस्ते भक्मेस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तस्सदमार्चेष वयकुस्यामवदयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातप्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः हर्तापरी जिग्निजे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयम् ऊतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्जगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरापुरणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातुभेषणं छिन्नो अस्तु द्विपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशिमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशगृहा पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्तां मतोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् तमकृतुम्बस्य दिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमेजम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा यदयश्च सर्वेऽस्मात् सियन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः सयेनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां रजनविप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागं सोम पवित्रमत्येतरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च விஸ்வக்சேன ஆராதனை மேலே பூசுத்தி ஆன பிற்பாடு இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு உரிய பாலிகையில் தீர்த்தத்தை சேர்த்து மேலே பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். அந்த கங்கணத்திற்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் கங்கணத்திற்கு உரிய கிரமங்களை செய்ய தொடங்க இருக்கின்றார். மேலே நம்மாழ்வார் சாதித்த அந்த பாசுரத்தின் பொருளை சற்று சேவிப்போம். ஸ்ரீ கோவிந்தனின் திருநாமம் ஒன்றான கேசவனை மனமுருகி சொல்லி இருக்க அதை கொண்டு சொல்லிக்கொண்டே இருக்க சாதித்தார். அதாவது அது உபதேசத்தை அருளியுள்ளார். கோவிந்த நாமம் அல்லது கேசவ நாமம். அந்த கேசவநாமத்தின் பெருமையை ஏற்றத்தை அதன் பொருளை சற்று சேவிப்போம். இந்த திருநாமத்தை சதா சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதாலே கொடிய பாப்பங்கள் அனைத்தும் போய் தொலையும் என்று அருளி செய்துள்ளார்.
கேசவ நாமத்தை அர்த்தத்தோடு உணர்ந்து சொல்ல வேணும் என்றில்லை. துக்கச் சுழலில் உள்ள போது சொன்னாலும், மன நிம்மதிக்காக இருக்கும் போதும் இந்த திருநாமத்தை கேசவா என்று மன நிறைய சொன்னாலே போதும். தினம் தினம் கொடிய செயல் செய்யும் பணியில் உள்ள யமகிங்கரர்கள் கூட பக்தர்களை நெருங்க மாட்டார்களாம். கேசவ நாமத்தை நினைவில் எப்போதும் வைத்துக்கொண்டும் துதித்தும் சேவித்தும் எழும் பக்தர்களை அணுகுவது என்பது கிங்கரர்களுக்கு நெருப்பில் தெரிந்து கை வைப்பதற்கு ஒப்பாக சொல்லுகிறது. இங்கே கேசவ திருநாமம் மற்ற திருநாமங்களை சொல்லுவதாலே உண்டாகும் பலன்களை இந்த ஒரு திருநாமமே நமக்கு அனுகிரகிக்கும். தப்பாது அனுகிரகம் பெறுவது அடியார்களுக்கு எளிது என்று ஆழ்வார் சாதித்தருளியுள்ளார். கொடுவினைகள் நம்மை விட்டு அகலுவதாலே நற்காரியங்கள் மேலே மேலே நடைபெற அந்த கேசவ கோவிந்த நாமமே பக்தர்களை அனுகிரகிக்கும். வைகுண்ட நாம கிரகணம் அசேஷ அகநாசனம் என்று பெருமானின் திருநாமத்தை சொல்லுவதாலே அதிலும் கேசவ நாம பிரபாவத்தாலே பாப்பங்கள் மிச்சம் மீதம் இன்று தீயினில் தூசாகும். அது சரி, கேசவா என்றழைப்பதாலே பாப்பத்தை போக்கும் ஓர் ஔஷதம் என்று நினைக்கத் தோன்றும். நிச்சயமே அது ஒரு மருந்துதான். மருத்துவனாய் நின்ற மாமணி வண்ணன் நம் கேசவ கோவிந்தன். இந்த நாமத்தை சொல்லுதலாலே பரம போக்கியமாக இருக்கும். பால் குடித்தால் இனியது என்று தோன்றும். ஜ்வர பித்தம் போகும் என்பதே ஆன்றோர்களின் திருவாக்கு. சாதாரணமாக உலக வழக்கில் தெரிந்தும் தெரியாமல் செய்யும் பாப்பங்களை போக்கிக் கொள்ள திவ்ய தேசங்களுக்கு சென்று பிராயச்சித்தம் செய்வர்கள். ஒவ்வொரு பாப்பத்திற்கும் குறிப்பிட்ட பிராயச்சித்தம் உள்ளது என்பர்கள். எனில் ஆழ்வாரால் உபதேசிக்க பெற்ற இந்த கேசவ திருநாமம் உச்சாடனம் செய்வது சர்வ பாப்பங்களுக்கும் நிவர்த்தி, ஏகதேச பிராயச்சித்தமாக ஆகின்றது. மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்தை ஸ்ரீ பூநிலாசமேத ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாஹிக மகோத்சவா கிஞ்சகர்மணி பிரதிசரபந்தன தேவதாராதனம் கரிஷ்யே. ஓம் யமர்ப்பயந்தி மணயோ ஹவிரயோஜோஹி அனிர்விபதா விராஜன் தம்மய தோஷாயஸ்யான்னாக்னிவிபணானி வதந்த். ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரீர்ஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்திரதேவதாभ्यो நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, ஆச்சமனியம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபచారాन् சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்வினா பகத் ஸ்வஸ்தி தேவ்யநீதர நர்வணாः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசூரோ ததாதன ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருथिवी சுச்சேதுனா ஸ்வஸ்தயே வாயுமப்ரமாமஹே சோமம் ஸ்வஸ்தி புவானஸ்ய யஸ்பதிः ப்ரஹஸ்பதிம் சர்வாகணம் ஸ்வஸ்தயே ஸ்வஸ்தயா ஆதித்யாசோ பவந்து நः விஸ்வே தேவானோ அத்ய ஸ்வஸ்தயே வைஸ்வானரோ வசூரக்ஞ ஸ்வஸ்தயே தேவாவந்திரபவ ஸ்வஸ்தயே ஸ்வஸ்தி நோ ருத்ரः பாத்தும் ஹாசः ஸ்வஸ்தி மித்ராவருணா ஸ்வஸ்தி பத்யே ரேவதி ஸ்வஸ்தி ந இந்திரஸ்யாக்னிஸ்ச ஸ்வஸ்தி நோ அதிதே கிருணி ஸ்வஸ்தி பந்தாமனூஜரேம சூர்யா சந்திரமசா விவ புனர்ததாக்ஞாதாஜானதா சங்காமேமஹி ஸ்வஸ்தயானந்தாரக்ஷமனிஷ்டநீமிம் மஹத்பூதம் வாயுஷம் தேவதானாம் அசுரக்னமிந்திராசகம் சமத்சு ப்ரஹத்யசோ நாவாமிவாரூஹேம அம்போமுச்சா மாங்கிரா சங்கயம் யஸ்வஸ்யாத்ரேயம் மனாசா ஜதாரக்ஷ்யம் பிரியாதபானுஷரணம் பிரபத்யே ஸ்வஸ்திகம் பாதே ஸ்வபாயின்னோ அஸ்து சுபாகம் சுபாம். இப்பொழுது எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தை நம்மை அதாவது பக்தர்களையும் காணச் செய்து பெருமானுக்கு முன்பு அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பித்து உரிய கிரமங்களை செய்வித்து அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீ வெங்கடவாணனுக்கும் பிறகு ஸ்ரீதேவி தாயார் பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். ஆழ்வாரால் உபதேசிக்கப்பட்ட இந்த கேசவ திருநாமம் உச்சாடனம் செய்வது சர்வ பாப்பங்களுக்கும் ஏகதேச பிராயச்சித்தமாக அமைகிறது என்கிறார். என்னாம சங்கீர்த்தனத்தோ விமுச்சதேஹி त्वनेक ஜன்மார்ஜித பாபசஞ்சயः பாபேந்தராக்னிஹி ச தைவ நிர்மலः மமாஸ்து மாங்கல்ய விவருதியே ஹரிஹி என்று விஷ்ணு தர்மோதரத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகம். அதாவது விஷ்ணு தர்மோதரத்தில் மாங்கல்ய ஸ்தவம் என்ற ஒரு தொகுப்பு, ஸ்லோக தொகுப்பு அதில் உள்ளது. என்னாம சங்கீர்த்தனத்தோ விமுச்சதேஹி அநேக ஜன்மார்ஜித பாப சஞ்சயத்து பாபேந்தராக்னிஹி ச தைவ நிர்மலः மமாஸ்து மாங்கல்ய விவருத்தியே ஹரிஹி என்கிறது. புலஸ்திய மகரிஷி தத் சிஷ்யனாம் தால்பியருக்கு உபதேசித்தது. பெருமானின் திருநாமம் சொல்வது என்பது உயரிய செய்கை. பாப்பங்களாகிற விறகு கட்டைகளை எரித்து சாம்பலாக்கும் அக்னி ஆகின்றது என்று உபதேசித்து அருளியபடி
கேசி என்னும் அரக்கனை கொண்டதாலே கேசவ நாமம் இவனுக்கு உண்டானது. பாப்ப கூட்டங்களான அரக்கர்களை அழித்து நம்மை காத்து ரட்சிக்க வேறு எளிதான வழி உண்டா என்ன? யஸ்மாத் த்வயைவ துஷ்டாத்மா ஹதஹ கேஷி ஜனார்தனஹ தஸ்மாத் கேசவநாமாத் த்வம் லோகே கியாதோ பவிஷ்யசி என்று விஷ்ணு புராணத்தில் கேசவநாமத்தின் ஏற்றத்தை அழகுற தெளிவுற நமக்கு உபதேசித்துள்ளது. அனைத்து பாப்பங்களும் தீனில் தூசாக்கும் என்பதே அனுபவ புதர்களான ரிஷிகள், ஆச்சாரிய சார்வபௌமர்கள் உயர்ந்த திருவுள்ள கருத்து. இவை அனைத்தும் பிரபன்னஜன கூட்டஸ்தரான நம்மாழ்வாரின் ஈரச் சொற்களுக்கு உள்ள உயர்ந்த பிரமாணமாக அமைகின்றது. மேலே அர்ச்சக சுவாமி இவ்விடத்தில் பெருமானுக்கு திருவடி சமர்ப்பிக்கும் அந்த புஷ்பங்களும் என்ன, மேலே அவருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தையும் ஒவ்வொரு சமயமும் அடியன் சொல்வது உண்டு. இந்த கங்கணம் சமர்ப்பணம் என்பது என்ன? பக்தர்களை ரட்சித்தே தீர்வேன் என்றும்படியாக கங்கணத்தை இவன் நித்தியபடியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அதுதான் இவ்விடத்தில் கங்கணத்தை சமர்ப்பிப்பது என்று அதை அர்ச்சக சுவாமி நம்மையும் காணச் செய்து அந்த கங்கணத்தை, மங்களமான கங்கணத்தை நம்மை ரட்சிக்கும்படியான பிரார்த்தனையை அவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் என்பதற்காகவே இந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பிப்பது என்பது. பகவத் பக்தி செய்து துதிப்பவைகளில் அவனுடைய திருநாமங்கள் சங்கீர்த்தனம் முக்கியமானதாக ஆன்றோர்களால் உபதேசிக்கப்பட்டது என்று நாம் சற்று முன் சேவித்தோம். இந்த கருத்தை கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீ கீதையில் சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் நித்தியயுக்தா உபாசதே என்று அருளி செய்துள்ளான். அதாகில் தன்னை எப்போதும் பாடி திரிந்து பூசித்து கொண்டும் திருநாமங்களை உச்சரித்து கொண்டும் கைங்கரியம் கொண்டிருப்பதில் ஊக்கமுடைய பக்தர்களை என்றும் தான் என்றுமே கைவிட்டதில்லை என்று உறுதிபட சாதித்தருளியுள்ளார். ஆகவே நமக்கு ஸ்தோத்திர பாடங்கள் தெரியவில்லை, வேதம் படிக்கவில்லை என்று இல்லாததை பற்றி நாம் நினைக்க வேண்டாம். தெரிந்த அந்த திருநாமத்தை நினைத்தால் போதும், உச்சரித்தால் போதும். மனதால் உச்சரிக்க அதாவது சொல்லும்படியான அந்த திறமை இல்லாதவர்கள் மனதால், கண்களால், புத்தியால் நினைத்தாலே போதும். மற்றோ மன்மனா மம பக்தோ மத்யா ஜீவ மாம் நமஸ்குரு மன்மனா மம பவ மத்பக்தோ மன்மனா, மனத்தால் நினைத்தால் கூட போதும் என்று மற்றொரு இடத்தில் கூறியுள்ளான். தன்னை பக்தியோடு மனனம் பஜனம் செய்பவர்களே மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யா ஜீவ மாம் நமஸ்குரு. சரி, நாமத்தை சொல்வது என்பது சிலருக்கு முடியும், சிலருக்கு முடியாது. ஆகவே மனதால் மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யா ஜீவ மாம் நமஸ்குரு மற்றொரு இடத்தில் கூறியுள்ளான் இந்த ஸ்ரீ கீதையில். இப்பொழுது பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தை நமக்கு காணச் செய்து ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். மனனம் பஜனம் செய்பவர்களை தன்னுடைய மனதிற்கு அன்பானவர்கள் என்று அருளி செய்துள்ளான். ஏனென்றால் சொல்ல வேண்டும் தான் என்று இவன் கீதையை சொல்லிவிட்டால் அது சொல்ல வேண்டுமே, சொல்லாதவர்களுக்கு, சொல்ல முடியாதவர்களுக்கு, காண முடியாதவர்களுக்கு அந்த பிராப்தி இல்லையே என்று துக்கப்படக்கூடாது அல்லவா பக்தர்கள்? ஆகவே அந்த காலத்திலே கிருஷ்ணன் உபதேசிக்கும் போது இதையும் சொல்லிவிட்டான். மன்மனாம் பவமக்தோவத்யா ஜீவமாம் நமஸ்குரு, மனதால் அன்பால் நினைப்பவர்களுக்கு கூட நான் அனுகிரகிப்பேன் என்று, அவர்களே சிறந்த ஞானி என்று அருளி செய்துள்ளான். இக்கருத்தையே ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் ஆனாதி நிதனம் விஷ்ணும் சர்வலோக மகேஸ்வரம் லோகாத்யட்சம் ஸ்துவன் நித்தியம் சர்வதுக்காதிகோ பவேது என்று சாதித்தருளியுள்ளார் ஸ்ரீ பீஷ்மாச்சாரியர். இன்ன காலம், இந்த யுகம் என்று வரையறுத்து சொல்ல இயலாத ஆதி அந்தமில்லாத எல்லா காலங்களிலும் யுக யுகாந்தரங்களிலும் எங்கும் உள்ளவன் ஸ்ரீ விஷ்ணு. உலகின் நடப்புகளை நன்றாக காண்பவன். எனவே இவனை வேதம் அக்ஷக என்றால் காண்பது, லோகாத்யட்சக உலகில் நடப்பதை அப்படியே காண்பதாக உள்ளது. வேதாந்தங்களை புகழப்பட்டவன். எனவே இவன் பிரம்மண்யக, பிரம்மாண்டமான இந்த வேதாந்தங்களாலே புகழப்பட்டவன் பிரம்மண்யக. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமான் திருவிழாரத்திலே பிரார்த்தித்து மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு தொடங்க இருக்கின்றார். இதை காணும் பக்தர்களும் இங்கு இந்த திருச்சொன்னையிலே எழுந்தருளிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அனைத்து அபிலாஷைகளும் ஆனந்தங்களும் உண்டாக பிரார்த்தித்து மேலே கல்யாண உற்சவத்தை தொடங்க இருக்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. அதே சற்றே वैवाहिक महोत्सवाक्यंजक्रमणीय उपासनाग्नो अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रमस्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहे शुद्ध शुद्धाभिरुदिभिः शुद्धोरयं
निधारय शुद्धो ममति सौम्यः इंद्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धोर्त्राणि दाशुदे शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं सुदाससे मयि देवाद्रविणमाजिदन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः पूर्वेरिष्टास्यामधर्मासमीराः मह्यं यदन्त मम जान हव्याकूति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी षडर्वेरणकृणोत विश्वे देवास यहवीरयत्थं महास्महि प्रजगामादनो धर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेत यः सिञ्चतपसो यत्यनिश्यते अग्निमश्वत्थादरि हव्यवाहकं शमीगर्भाञ्जनगिन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्वादरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखितादिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं भ्रमं पुरस्तादुषीमतसृचो वेन आवः समुद्रया पमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तवाचकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तदारे साधन्यं विदत्यकं च भेकं तिस्रमणं योदरासतस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ॐ सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गिदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्या पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो जिग्नयेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो जिग्नस्य पावनेस्थः परुषर्ष पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्नेपो अग्ने गुमोग्रयमं यज्ञं निखिताग्ने यज्ञपदं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि गिरवाणवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिरवाणवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रणया प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्राय दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमाय दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमाय दृष्टिनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोभामि प्रजापतये दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्राय दृष्टिनोभामि वसुभ्यो दृष्टिनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टिनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनोभामि आपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिनोभामि बृहत्पये दृष्टिनोभामि मित्राय दृष्टिनोभामि वरुणाय दृष्टिनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टिनोभामि अस्मिभ्यां दृष्टिनोभामि पूष्णे दृष्टिनोभामि कक्षाय दृष्टिनोभामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टिनोभामि औपासनयज्ञाय दृष्टिनोभामि यज्ञदेवता विष्णेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिनोभामि आद्यं तृप्यतिसृजामि चरं तृप्यतिसृजामि अग्नेत्योदर्शि समितिः स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्प्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्थानपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिथो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्य चरुभिः यमामे अग्निष्टका धेनवः सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च यमामे अग्निष्टका धेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमृतमानय अयन्तगित्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिदास्मान् प्रजगावशभिर्ब्रह्मवक्षसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा
वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासना यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तनो यदा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो प्रदानि विस्पशे इन्द्रस्य यत्यसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमे वचक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासमविपन्यमोजा कृपाकं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు నేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు నేటి తమ్మిపై దానవు
ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే మీకు మీ ఓం శ్రౌతస్మార్తారికం కర్మనిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఘ్నసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహర్వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానారాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నండి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యనగాపదే యశోపదేత్కిష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకమాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవనేక్షుసురా సర్పితరిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మల పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య భారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతికిం పురుషహారీరావృత భద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యగణమనక గురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకే రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయత్వార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహిత ధామా తపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వచనహస్రావధానే ఏకైకదినాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫల సిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖణోమణీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణు పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహారకేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరుత్రాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ
ऋग्यजस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आपनवान उर्ववेदलमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवीनाम्नीं मां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेधया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधजेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः नमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु திருமணங்கள் அதற்கு எம்பெருமானுடைய குலம் கோத்திரங்கள் சம்பத்து பிராட்டிமாருடைய சம்பத்து அனைத்தையும் சாதித்தருளிய இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி மேலே பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த திருமாங்கல்யத்திற்கு உரிய கிரமங்களை செய்ய இருக்கின்றார். சற்று முன்பு விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் அந்த நாமாவின் பெருமைகளை எப்படி சாதித்தருளியுள்ளது என்பதை சேவித்தோம். அநாதிநிதனம் விஷ்ணும் சர்வலோக மகேஸ்வரம் லோகாத்தியட்சம் ஸ்துவன்னித்யம் சர்வதுக்காதிகோ பவேத் என்று விஷ்ணு நாமத்தின் பெருமைகளை சாதிக்கும் பொழுது இன்ன காலம் இந்த யுகம் என்று வரையறுத்து சொல்ல இயலாத ஆதி அந்தமில்லாத எல்லா காலங்களிலும் யுக யுகாந்தரங்களிலும் எங்கும் உள்ளவன் ஸ்ரீ விஷ்ணு. உலகின் நடப்புகளை நன்றாக காண்பவன். எனவே இந்த வேதம் இவனை லோகாத்தியட்சக அட்சக என்றால் காண்பது, கண்களால் காண்பது. காண்பது என்பது கண்களால் உள்ள அந்த இந்திரியத்தால் செய்யப்படும் ஒரு செயல். ஆக லோகாத்தியட்ச, லோகம் என்றால் உலகம், உலகத்தில் நடப்பவைகளை லோகாத்தியட்சக இதை நன்றாக கண்டு அவன் உணர்பவன். அதாவது லோகாத்தியட்சக என்றால் என் உட்பொருள் என்ன, அவனை ஏமாற்ற முடியாது. அவனுக்கு தெரியாமல் நாம் செய்கிறோம் என்று செய்யும் அந்த செயல்களை கூட அவன் கண்டுவிடுவான். வேதாந்தங்களால் புகழ் பெற்றப்பட்டவன். எனவே இவன் பிரம்மண்யக, அனைத்து தர்மங்களையும் நன்கு அறிந்தவன். எனவே சர்வ தர்மஜக என்று அழைக்கப்படுகின்றான். வேதங்களால் துதிக்கப்பெற்றதனாலே கீர்த்திவர்தனக என்று உலகின் அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் உடையவன். உலகின் கண் உள்ள அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும், ஏன் லக்ஷ்மி தேவியினிடத்தில் உள்ள போது ஐஸ்வர்யங்கள் என்று தனிப்பட்டு சொல்ல வேண்டுமா என்ன? மகத்பூதக என்று விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் போற்றியுள்ளது. உயர்ந்த அனைத்தையும் இயற்கையாகவே தனதாக்கிக் கொண்டவன் இவன். லோகநாதனாக இருக்கின்றான். சர்வபூத பகோத்பவக என்று போற்றியுள்ளது வேதம். அனைத்து துக்கங்களையும் போக்கும் பாரமசீலன், அனைத்து பெருமைகளையும் உடையவன் இவனே. பக்த ரட்சகன், பக்தவத்சலன். ஆக நாம் ஏதேனும் தவறு செய்துவிட்டால் கூட இவன் தெரிந்துவிடும். லோகாத்தியட்சக அல்லவா, எனவே இவன் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஆக அதை நாம் உணர்ந்து இவ்வாறு தவறு செய்துவிட்டேன் என்று உணர்ந்து அவனிடத்திலே திருவடிவாரத்திலே பிராட்டி முன்னிட்டு கொண்டு இவனை சேவித்தால் அனைத்து தோஷங்களும் தீயில் தூசாகும் என்று ஆண்டாள் சாதித்து அருளியது போல அனைத்து தோஷங்களும் விலக்கப்பட்டுவிடும். திருச்சந்த விருத்தத்தில் திருமழிசை ஆழ்வார் கடைந்து பார்க்கடல் கிடந்து காலநேமியை கடைந்து உடைந்த வாலி தந்தனக்கு உதவ வந்து ராமனாய் மிடைந்த ஏழ்மரங்களும் அடங்க வெய்து வேங்கடம் அடைந்த மாலபாதமே அடைந்த நாளும் உய்மினோ என்று எப்படிப்பட்டவன் அனைத்து அவதார தசைகளையும் செய்துவிட்டு இப்பொழுது வேங்கடத்தில் இந்த கலியுகத்தில் எழுந்தருளி அந்த பக்தர்களை ரட்சிக்கும்படியாக எழுந்தருளியுள்ள இவனுடைய பாதங்களை, மால பாதங்களை, திருமாலின் பாதங்களை தாயாரின் தன் இதயத்திலே வைத்துள்ள மால பாதந்தனை பணிந்தால் பற்றி கொண்டால் அனைத்து தோஷங்களும் பாப்பங்களும் நீங்கும் என்று பகவானை பிரார்த்தித்து வேண்டிய பலன்களை பெற சிறந்த திவ்யதலம் இந்த திருவேங்கடம். பக்தர்கள் அணுகி பலன்களை பெற ஏற்ற இடம் திருமலை. திருவேங்கடமுடையானுக்கு பக்தர்களைக் கண்டு அனுபவித்து அவர்கள் வேண்டும் வரங்களை அள்ளி தர ஏற்ற இடம் இந்த திருமலையே. அனைத்து அவதாரங்களையும் செல்பவனே செய்து முடித்து பக்தரட்சணம் செய்த மனமுவந்து எழுந்தருளியுள்ள இடம்
அதுவும் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் இடம் இரு திருவேங்கம் எனும் திருவேங்கடமுடையானுடைய திவ்ய தலம். இப்பொழுது பெருமான் முன்பு இந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பித்து அதை பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். அதை சற்று சேவித்து மேலே இவருடைய கல்யாண குணங்களை அனுபவிப்போம். प्रजापतिस्त्रियां यशः प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शतम्. श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम्. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. प्रधान होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवित प्रसवा ओम अग्निरेत प्रथमो देवता नागं सो अस्य प्रजामञ्च नमर्च्य भाषात् तदयकं राजावरणो नमञ्जदां किधेयक स्त्री पौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा
इमं मे वरुणस्तुति हममत्याज मृडया तामवस्राजगे स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमान सदाजास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोद्रजगं समान आयु प्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासचेष्ठाः निजिष्टो वह्नि नमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रमपत्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने मम भवते नेतिष्ठो अस्यापशतो व्यष्ट अवजक्ष्मणो वरुणगमृडानो वेहमृडेगं सह वोणयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते जानो देहिमेषटग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासावीः अश्चर्यपदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवणनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पज्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयं धारावुदन्या इवा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवणनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवणनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पज्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयं धारावुदन्या इवा अतिगाहे महिद्विषः ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ सर्वप्रागचित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नवतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतहे पदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिमेव चक्षुरादरग स्वाहा तद्विप्राणो विमन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थमपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ॐ यतस्य कर्मणोत्यदेशं जित्वा अन्योन्यमहाकरम् अग्निष्टस्मिष्टकृत्वित्वान् सर्वकृष्टिष्टकं सुरङ्गरोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते जुहदहुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतज्ञस्तत्पुनराः जातवेदावित्रशनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदातरिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अश्विनाजिवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरिनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दुराधी स्वाहा देवीभ्य स्वाहा
तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं जौर्भक्तं पृथ्वी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैर्नं वेदर्जैर्नं जौर्जैर्नं पृथ्वी जैर्नं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्धाम्रहिरहविडा कृतेन समादित्यैर्वसविस्सम्मर्ध्यै समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नमो गच्छति यत् स्वाहा आद्यशेषं इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षपितृप्यता महाप्रपितामहाश्चाक्षीयमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकृस्ताः अनुमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टाकवरेष्ठो क्रमवचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लगितम्मादीक्वर्धमत्रमेधां वष्पन् पृथिव्या देवो वा विष्णुवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिमपणया दक्षिणतः प्रतिमपणया उत्तरतः प्रतिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदरमसि दक्षिणतो विष्णोः सदरमसि उत्तरतो विष्णोः सदरमसि प्राच्यां विष्णोः सदरमसि भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्ते तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः उचतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जजिन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दासनाय कृतन्तमयादेव परिपूर्णतस्ते प्रागश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वैदानि शेषावजेनानां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचां मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रख्याजमणीं समर्पयामि यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु இப்பொழுது திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு பிறகு லாஜஹோமம் என்னும் பொறியிடும் அந்த கிரமத்தை செய்வித்து மேலே அர்ச்சக சுவாமி திருமண திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான அந்த கிரமத்தை செய்ய இருக்கும் வேளையில் ஏற்றமுடைய திருமலையை பற்றி நித்தியம் முறையும் பேசும் தெய்வமான திருவேங்கடமுடையான் ஏற்றமுடைய திருமலைக்கு ஒப்பான க்ஷேத்திரம் பிரம்ம சிருஷ்டியில் இல்லவே இல்லை என்பது
பூர்வாச்சாரியர்கள் இல்லை, வேதத்தின் கருத்து. ஸ்ரீ வெங்கடவனுக்கு இணையான தெய்வமும் இல்லை, இனி உண்டாகப் போவதும் இல்லை. ஏனெனில் பகவான் உகந்து எழுந்தருளிய தலம் இந்த தலம். அவனை மீறி எதுவும் நடந்தேராது. அவனது ஆட்சிக்கு உட்பட்ட தலம் இது. நைமிஷாரண்ய வனத்தில் சூத்தக மகர்ஷி சௌனகாதி முனிவருக்கு உபதேசித்தது. 108 திவ்ய தேசங்களில் ஸ்ரீமுஷ்டம், தோதாத்ரி, வெங்கடாச்சலம் என்னும் 8 முக்கிய திருப்பதிகளில் வெங்கடாச்சலம் என்னும் இந்த திவ்ய தம்பதி எழுந்தருளிருக்கும் எல்லாவற்றிலும் விட மேன்மை பெற்று விளங்குகிறது என்று இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி வெங்கடநாயகன் சார்த்தி கொண்ட அந்த மாலையை ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், மேலே ஸ்ரீதேவி தாயார் சாற்றிக்கொண்ட அந்த மாலையை வெங்கடவாணனுக்கும், பிறகு ஸ்ரீ பூதேவி தாயாருக்கும் மாற்றி அந்த மாலை மாற்றல் இந்த கிரமத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலே ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி தாயாருக்கு இடையில் ஸ்ரீ வெங்கடவாணன் எழுந்தருளச் செய்து இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் சேர்த்தியிலே தலம்பராலு என்னும்படியான அட்சதை பரிமாற்றங்கள் நடக்க இருக்கின்றது. எல்லா மங்களங்களும் எல்லா அடியாரிடம் பெற்று வாழும் இடமாக இந்த ஸ்தலம் ரிஷபாச்சலம், அஞ்சனாச்சலம், சேஷாச்சலம், வெங்கடாச்சலம் என்று 4 வித திருநாமங்களால் விளங்குவதாக புராணத்தில் விரிவாக சூத்த மகரிஷி உபதேசித்தருளினார். 3 லோகங்களிலும் மேன்மையான இந்த திருமலை மிகுந்த உயர்ந்த புண்ணியத்தலமாக விளங்குகின்றது. ஆனபடியால் இதை பிரதட்சிணம் செய்பவர்களுக்கு உயர்ந்த நற்பலன்களே ஏற்படும் என்று அருளி செய்துள்ளார். இந்த தலம் ஆதிவராக க்ஷேத்திரமாகும். இங்கு எழுந்தருளியுள்ள லக்ஷ்மி வராக பெருமானும் பக்தர்களின் விரோதிகளை அடித்து பக்த ரட்சகனாக எழுந்தருளி அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறான். ஆக இருவராய் வந்து இவரிடத்தில் எழுந்தருளி அனைத்து அடியார்களையும் ரட்சித்து கொண்டு இன்றளவும் காத்து கொண்டு சேவித்து கொண்டும் இருக்கின்றார்கள். பகவான் பூதேவி தாயாரை கவர்ந்து சென்ற இரண்யாட்சனை அடித்து பூதேவி தாயார் ரட்சித்த ஸ்ரீ வராக பெருமான் பக்ஷிராஜனான கருடனை ஏவி வைகுண்டத்திலிருந்து கிரீடாச்சலத்தை கொண்டு வரச் செய்து இந்த பூமியில் வைத்து அந்த பர்வதத்திற்கு திருமலை என்ற பெயரும் சார்த்தியாயிற்று. அந்த திருமலை வெங்கடவாணன் அவனை சேவித்துக் கொண்டிருக்கும், அவனது உயர்ந்த கல்யாண உற்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த சின்னத்துறையின் மூலமாகவும் நேரடியாக வந்து சேவித்துக் கொண்டும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் விரும்பும் அனைத்து பலன்களையும் தந்தருளி மேலே திவ்ய தம்பதிகளுக்கு பரிமாற்றம் செய்யும்படியான அந்த அட்சதை பரிமாற்றம் தலம்பராலுவை சேவித்து அனைத்து பக்தர்களும் அனைத்து பலன்களையும் மங்கள பலன்களையும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ வாழ்த்தி அமைகிறது இந்த வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல். நன்றி. పేరుల ముత్యాల మెడ
తలంబ్రాల వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ